Look here, what we have understand the getting the understanding of the flow. What are the flow? And for the understanding of the flow, there are the two. There is interaction of the flow. There is a two thing. If you talk about the toolbox of the flow, toolbox of the flow. Inside of toolbox there are two things. One of the element and second one is a manager element for those things who can be added inside the flow. And manager it's for the data processing. For example, whatever the data is run in the background, that the thing is managed by the manager. Okay, inside of the toolbox there are two things. One of the element and second one is a manager tab. What are the importance of the managers tab? Manager tab flow के resources को manage करता है. For example, what kind of the resources kind of the those resources which is example formula variables. This kind of the resources are managed by the manager tab. And first one is the element. ये actually building block होते हैं flow के. Whatever the building block of the flow, that is the element के use से हम used to design the logic. It's used for the designing the logic what your flow does. For example, if I talk about the elements inside of the flow, there is a element. There is a three section. One is the interact, second is the logic, and third one is the data. Interaction, there is a screen, action, and subflow. Screen is for the input. Action, if you create any action. For example, if you created any action using the Apex, and any action using the any mails template action you created, these things can be under the action tab. And subflow, flow inside of the another flow. That three things are the inside of this. Then logical part is the its assignment, for the assigning the value, for which kind of the value assigned to the which one variables. value assignment के लिए यूज आते हैं assignment. Decision, for decision if else statement like that is a decision logical block. Decision logical elements. And loop for the repetition things, and collection sort for the the collective or items. If I talk about the data, there are the five things. First one is a create record. Whatever the input is taken from the screen, that actually created inside of the object using the create record. Using the create record. Update record for the field update of the record. For the updation of the field, we use the field record. Get record for the retrieval of the record from the any object, that we use the get record. Delete record, from deleting the record. For the deleting record, we use the delete record. Rollback record, return to the previous state, that we use the rollback record. These things are the element things. And action, what are the action create the adding the flow. Adding flow inside of the multiple flow can be added, that thing can be done by the action. Some action related is written in the Apex, then you can add the action into the in flow action. If something you have the written in the Apex and then you want to add in the flow, then you can done by the action thing. Similarly, email send action is initially created, and after that add in the flow. In email send action is initially created, and after that add in the flow. This kind of the action is the things action things have. So what the element ये actually building block होते हैं flow के. Element are used to design the logic what your flow. For example, screen used
टू यूज़र से इनपुट के लेने के लिए होता है। फॉर्म असाइनमेंट फॉर द वेरिएबल में वैल्यू सेट और अपडेट करने के लिए होता है। डिसीजन इफ़ एल्स कंडीशन के लिए, जैसे इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 10,000 एंड गेट रिकॉर्ड सेल्सफोर्स से डेटा फेच करने के लिए होता है। क्रिएट रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड को बनाने के लिए होता है। अपडेट फॉर द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए होता है। अब डिलीट रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए होता है। लूप मल्टीपल रिकॉर्ड पे आइटरेट करने होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द लूप फॉर द अल्टरेटिंग ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड यूज़ द लूप एंड सब फ्लो दूसरे फ्लो को कॉल करने के लिए होता है। अब वन एंड आफ्टर फ्लो को कॉल करने के लिए होता है। एलिमेंट इक्वल टू फ्लो लॉजिक प्लस एक्शन है। जो एलिमेंट होता है उसमें फ्लो लॉजिक और एक्शन होता है। ठीक, अगर देख हम बात करें क्रिएट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड, इस पांचों में हमको ऑब्जेक्ट लगेगा कि हमको किस ऑब्जेक्ट के अंदर काम करना है, वो चीज़ भी लगेगा इसमें। और इन सारे में ऑब्जेक्ट लगेगा, ये श्योर है। डिसीजन में कोई वन इनपुट आउटपुट होगा, इसमें नहीं कह सकता तू। अगर लॉजिक में बात करेंगे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक, ये अंडरस्टैंड कर लिए व्हाट आर द एलिमेंट्स, एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी फ्लो के। और सेकंड इज़ अ मैनेजर, ये फ्लो के रिसोर्स को मैनेज करते हैं। मैनेजर क्या करते हैं, फ्लो के रिसोर्स को मैनेज करते हैं। मैनेजर टाइप इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटा रिसोर्स। व्हाट इज़ द यूज टू क्रिएट एंड द मैनेज द डेटा रिसोर्स इन द फ्लो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू क्रिएटेड एनी वेरिएबल, डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ID, you created any variable, you can store the variable inside of that. And second one is the collection, multiple record store करने के लिए होता है। and constant for the कलेक्शन होता है फॉर द मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर करने। वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए होता है पर्टिकुलर एक टाइप का डेटा, इसमें दैट मीन्स डेटा टाइप इज रिक्वायर्ड। कलेक्शन में मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए होता है कांस्टेंट फिक्स वैल्यू को। और फॉर्मूला होता है कैलकुलेट लाइक अमाउंट, कैलकुलेट का के लिए होता है अमाउंट लाइक अमाउंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 0.1, फॉर दैट यूज़ द फॉर्मूला। और चॉइस ड्रॉप डाउन होता है फॉर द सेल्सफोर्स फ्लो। और रिकॉर्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, फुल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए होता है। वर्ड्स फुल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम रिकॉर्ड्स वेरिएबल को यूज़ करते हैं। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स के वो मैनेजर के अंदर समझ गए। अगर वो इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड द मैनेजर पर्पस, एलिमेंट इस एक्शन परफॉर्म करता है और मैनेजर क्या करता है, डेटा को स्टोर और मैनेज करता है। और यूज़ फ्लो डिज़ाइन, एलिमेंट का यूज़ होता है फ्लो डिज़ाइन में होता है। और मैनेजर क्या करता है, बैकएंड में डेटा हैंडल करता है। एग्जांपल क्रिएट रिकॉर्ड डिसीजन, दिस आर द एलिमेंट्स। और किसी वेरिएबल और फार्मूला को लगाना, ये आर द मैनेजमेंट। ठीक, ये समझ गए व्हाट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो के इंटरफेस को समझ गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, लेकिन इंटरफेस को समझना।